Now, there are problems ahead. This third phase of vaccination, and perhaps the most important right now, which begins on the 1st of May, to vaccinate all adults 18 plus. Both Punjab and Delhi governments have raised the red flag. They say there's a shortage of jabs. They say that this will disrupt plans to immunize all adults. Punjab's health minister, for example, Balbir Singh Sandhu, insists that the state does not have adequate number of doses to inoculate people between 18 and 45. Delhi government again says that it faces a huge shortage of vaccines and that it may not be able to meet the increased demand of vaccines. The Delhi government says it's requested vaccine manufacturers for these jabs. Several opposition ruled states have already said that because of the vaccine shortage, they may not be able to roll out the Vaccine for All initiative from the 1st of May. अभी वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन के लिए हमने कंपनी से रिक्वेस्ट की है. अभी जैसी वैक्सीन आती है तो आपको बताएंगे. अभी आपको 1-2 दिन में बताते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो सबसे इम्पोर्टेंट है ना. तैयारियां सारी हैं पर वैक्सीन होना जरूरी है. मुझे लगता है कि भी शायद वो हम उस टाइम पे स्टार्ट ना कर पाए. जेकर आज तक अभी तक कल हमारे पास 2 लाख आई थी, उससे पहले 1.5 लाख आई थी, लेकिन अभी तक हमारे पास कोई इंटीमेशन नहीं है कि आज हमको कितनी मिले, कल कितनी मिल रही है. जेकर हमारे पास कम से कम भी 10 लाख वैक्सीन आएगी तब जाके हमारा ये काम स्टार्ट हो पाएगा. So you've heard 2 states, you've heard Delhi, you've heard Punjab. Now listen in to Union Health Minister Dr. Harshvardhan on the availability of vaccines and also oxygen, another major bone of contention between the centre and some of the badly affected states. स्टेट्स ने 16 तारीख से लेकर आज तक जितना भी उनका परफॉर्मेंस रहा है, हम किस स्टेट को कितने टीके देते हैं ये उस पर आधारित है कि वो कितना टीके लगा रहे हैं. हमने तो अपनी गाइडलाइंस क्लियर कर दी. पूरी भारत सरकार देश भर के लिए टीका खुद अपने पैसे से खर्च कर कर खरीद रही थी. उसको सारे देश में डिस्ट्रीब्यूट कर रही थी. डिस्ट्रीब्यूट करने का क्राइटेरिया उनकी योग्यता और क्षमता, उसके आधार पर 16 करोड़ से ज़्यादा डोजेज हम स्टेट्स को दे चुके हैं. यानी 1 करोड़ से ज़्यादा डोजेज स्टेट्स के पास अभी भी हैं और कुछ लाख डोजेज ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं. जब हम पाइपलाइन में कहते हैं उसका मतलब है कि अगले 2 तारीख से लेकर आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं आया है जब उनकी क्षमता के हिसाब से उनको वैक्सीन ना मिला हो और हमारा किसी स्टेट के लिए पाइपलाइन में डोजेज ना हो. अभी 1 तारीख के बाद हमने बड़ा स्पष्ट नीति तय की है, क्योंकि स्टेट्स की डिमांड थी कि इसको लिबरलाइज करो, हमारे को भी अधिकार दो पॉलिसी को तय करने का, हमको भी जो है वैक्सीन को ख़रीदने का अधिकार दो. बाज़ार के लोगों को क्यों नहीं दे रहे हो, कॉरपोरेट को क्यों नहीं दे रहे हो. तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, अब जितनी वैक्सीन देश में बनेगी हम उसका आधा 50% भारत सरकार अपने पैसे से खरीद के वो सारा का सारा भी आपको देगी. 45 साल से ऊपर के लोगों को उसी प्रकार से वैक्सीनेट करने के लिए, और बाकी 50% के लिए हमने स्टेट्स को कहा है कि अब आप करने के लिए, और बाकी 50% के लिए हमने स्टेट्स को कहा है कि अब आप जो बाकी कैटेगरी है उसके लिए आप कंपनी से आपके लिए उपलब्ध कराई जाएगी, कॉर्पोरेट सेक्टर को, प्राइवेट अस्पतालों को उपलब्ध कराई जाएगी. सब लोग मिलकर जब प्रयास करेंगे तो कोविड के खिलाफ जंग जो है वो और ज़्यादा. Private hospitals may find it difficult to start vaccination for all adults from the 1st of May. Why? Because in the run-up to this universal immunization drive, private hospitals say they've been told to return unused stock to the government by the 1st of May. These jabs, according to the government, are only meant for frontline workers of 45 plus age group. Now, speaking to India Today on India First, Dr. Ravi Malik, Chairman and Managing Director of the Radix Hospital, insisted that the centre has directed all state chief secretaries that any unutilized free vaccine stock as on the 30th of April needs to be returned to the centre. Private hospitals need to procure fresh stock for vaccinating 18 plus age group. Now, the president of the National Healthcare Federation of India, Dr. Harsh Mahajan, says that considering the current situation, private sector may not have a single dose to vaccinate people from the 1st of May. Now, in a letter, the Narendra Modi government told states that free vaccines supplied by the centre can only be used for priority groups such as frontline workers, health workers and those above the age of 45.
from 1st of May, all the private players, they are supposed to be procuring their vaccines from the manufacturer from the manufacturing company. Yes. Now the issue is that, like, I'm running a private hospital. Now government will not be supplying me. It is my headache to go and contact the manufacturer. So we have been trying. My medical superintendent has been trying to contact the manufacturer, but we are not able to procure any dose. So now what is going to happen is, from 1st May, a lot of people will come for vaccination, especially those whom we have given the first dose. They will be coming for the second dose. Besides the, the people who are in the range of 18 to 45 years, they will be coming to us, and we will not be having any vaccine. The private sector will not have a single dose to give on day one in the entire country. Till now, the doses were coming through the government network and were being supplied to the private sector. And what the private sector was basically doing was dispensing those doses and putting the jabs in the arms of people. We have spoken as an organization to several manufacturers, and the earliest they say they can even consider the demand of the private sector is 6 to 8 weeks from now. We have spoken to international companies which make the vaccine, and their reply is that they will not deal with the private sector. They would rather be dealing with the governments across the world. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel, and don't forget to press the bell icon to stay updated.